Each pyramid needs someone at the top. The same can be said about our team. So I am very thrilled to we have with us Mr. Sumit Gupta sir. हमारा दिक्कत कोई समझो भाई, हमारा कैमरे की बैटरी पूरी डेड हो गई है और यार इस बार अच्छा खासा इन्होंने बड़ा करा, आई थिंक पैसा लगाया भाई, बहुत पैसा। सो फाइनली दोस्तों यार, बियर मार्केट बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आ गया है और इतनी ज़्यादा बुरी तरह में आप सभी को पता है कि कितने ज़्यादा लॉसेस, कितनी सारी चीज़ें नीचे की तरफ जा रही हैं और ऐसे टाइम पे अब हमें जाना पड़ रहा है एक इवेंट में। तो अब कुछ और तो मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि अपनी लक तकिया जो स्कूटी है इसी को लेके यहाँ पे निकल लेते हैं। तो थोड़ा सा बियर मार्केट है, तो बियर मार्केट के अकॉर्डिंग तो बाकी सारी चीज़ें आप समझ ही सकते हो किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही हैं, क्या है। बट क्या करें, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे मत लेना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जा रहा हूँ Coindcx के बिटकॉइन के आप इवेंट में कह सकते हो, मीटअप कह सकते हो, जो भी कहना चाहते हो। और आप सभी को पता है कि इस तरीके के जो इवेंट्स है, इस तरीके के जो मीटअप्स हैं, वो मैं आप लोगों के पूरे कवर करता हूँ, पूरी वीडियोस कवर करता हूँ। और जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम कैमरा निकाल के अपना चालू कर देते हैं वीडियो को रिकॉर्ड करना। तो थोड़ा सा आप लोगों से हेल्प ये है कि जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि बाकी लोग भी इसी तरीके से अपडेटेड रह सकें। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा। आपको इसी तरीके के ढेर सारे जो इवेंट्स हैं वो मिलते रहेंगे। फिलहाल मैं इंदौर के इवेंट्स कवर कर रहा हूँ जो इंदौर में भी यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर के अंदर और भी बहुत सारे इवेंट्स होंगे जो आउट ऑफ इंदौर या आउट ऑफ कंट्री भी होंगे, तो वो भी डेफिनेटली आपको चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो फटाफट अपने ईयरफोन्स निकालिए, अपनी जो भी स्क्रीन है उसमें वीडियो को फुल साइज करिए और एंजॉय करिए इस पूरे ब्लॉग को। मैं आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूँ Coindcx का व्हाइट पेपर वाला ये इवेंट भी, जिसको कि आप पूरा देख सकते हैं। तो अगर आप इंदौर नहीं आ पाए, इवेंट में नहीं भी आ पाए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए जा रहा हूँ और इवेंट को पूरी तरीके से कवर करके आपको वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं इवेंट के अंदर। इवेंट के अंदर तो हम लोग यहाँ पे जा ही रहे हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे। आइटनरी में मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे कर दूंगा कि क्या क्या आइटनरी हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है। बट हाँ चलो, मज़ा आने वाला है। वेब के बहुत सारे डेवलपर्स आएंगे, अलग अलग कह सकते हैं कैटेगरी के भी डेवलपर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। और Coindcx है तो उनके बारे में भी वो बताएंगे कि आगे उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, और मे भी शायद हमें और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले। तो लो जी लोग, फाइनली पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ पे इवेंट रखा है। और अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो ये है, पूरी बिल्डिंग थोड़ा ढंग से नहीं दिखा होगा, पर चलो फटाफट मैं कवर करता हूँ। अंदर चलते हैं और यहीं से अपनी गाड़ी को भी अंदर घुसा लेते हैं Coindcx के इवेंट में, बेसमेंट में ना। तो फाइनली यार अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा था, बट फाइनली हम पहुंच गए अपने इवेंट वाली जगह पे। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो बाहर हमें मिल जाता है Coindcx के लोकल चैप्टर का बोर्ड भी इस पॉइंट पे। एंड की भी डेवलपर टीम्स यहाँ पर है, तो चलो उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, देखते हैं कि अंदर हमें और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। इवेंट स्पेस की बात करें तो यार इस बार बहुत बड़ा इवेंट है। पिछली बार से भी अगर कंपेयर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्पेसिंग्स इस बार ली हुई है। पिछले मैंने तो लगभग 2 इवेंट अटेंड करे थे, पर ये तीसरा इवेंट है और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली है। तो आगे चलते सभी के इंटरव्यू भी यहाँ पे कवर करेंगे। और इसी के साथ अगर बात करें तो पूरी की पूरी स्पेस आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। Okay, let me tell a story of Uttar. So on May 22, I was going through Twitter and I saw a tweet from Uttam Singh, and the tweet said that I'm in Indore, Pepsi community of Indore, let's meet. And he said Chappan Dukan. Although the venue changed 3 to 4 times and finally we met at CCD Indore, which was at Zanzibar. That is when we thought of making something in Indore, making something big in Indore. Means actually implementing WAGMI. That is what we were thinking that day. And here we are with almost 6 to 7 meetups already completed successfully in Indore. Next up, we have a huge celebrity of our Web3 community. At least I prefer in a huge community. We have Jaskaran Singh Malhotra sir. Please, a big round of applause.
Please, a big round of applause, please. Quality होना चाहिए, right? So next up we have Aditi Gupta. She is a Web3 enthusiast and an educator with expertise in community building, social media, and marketing across various Web3 boards. So make a huge round of applause for Aditi ma'am. Now, but what I always realize, you still have so much to learn. And I'm just here to share my story, which I'm sure a lot of you can relate. So, looking forward to the conversation, and I'm looking at all the women here. Okay. So Chitrans is lead developer at Lead Chain, and he has graduated from IIT Kharagpur. IIT Kharagpur got the applause. I must add this after everyone's intro, yeah? Okay. Been in Web3 for more than 1.5 years and has previously worked with CryptoVel and HQ. Chitrans Gupta. Hey everyone, so good to see you all. I'm looking forward to the session that we have, and I hope you get some value out of all the discussions we are going to have. So thank you so much for coming in. Hey everyone, pretty excited to host you all at today's Imperial location. Looking forward to have this session with you all of you. And let's have a lovely interactive conversation with each other so we get to know a lot from each other and we learn so many things from each other. And I hope you also have the same agenda as what I'm looking forward to host on today. Yeah, basically about me, I'm Arshwardhan. I mainly Rust, Solidity, Python, Go, Zig, Haskell, and Rust developer. I currently work with Backnami as a developer advocate, but yeah, I'm simultaneously working with multiple projects in the blockchain space. And my previous projects have been Stardust, a game on the Solana, and Mango Markets, which is a DeFi protocol on Solana. We can chat about that later. But yeah, if you guys have any development related queries or why exactly I call myself web 7 hater, so that's the interesting conversation I'm saving for a coffee cup. Cool. Moving ahead to the session, why we are talking about Web3 infrastructure today. And before that, I want to first acknowledge myself. Like, how many people from here are familiar with Web3? Uh, Anyone would like to describe what exactly it is? Volunteers, can you give the mics? Cool. Hello everyone, my name is Boris Gomez and like web internet is, they are also on web 1. So web 1 is like a user only see, they can't change. In the technology is converted in second hand, we are calling web 2. Just like we connect era need. So web 2 give access for user ID, read and write. So in web 3, they are giving the user ownership. Like we are in a in when in Facebook is created web 2 and we have a not ownership on our ID. In same thing is that apply in web 3. So we have a ownership and authority to just like use it web 3. So web 3 is a real right and ownership. Anyone else? Web 2 is all about centralized system. So we are shifting towards decentralization and so before Web 1, there used to be Web 1, and before Web 2, there used to be Web 1, where I set back of him, like, it was read only error. People, like, there were some people which were publishing content via open source mediums, and people were grasping that content via, like, RSS feeds, things like that, right? And it was having very short audience where people were mainly consuming content and not producing content. And then like this era progresses to Web 2 where people were allowed to read and write. But yeah, there get released a lot of proprietary softwares, the Facebook, WhatsApp, all these things came in. But yeah, how many people have used Orkut? Like, who is actual Web2 guy over here?
Cool, amazing, super. So, missing those old awkward days when I used to be in my 8th class or 7th class, something. That time, awkward was an amazing thing, man. Like, it has a huge potential. But anyways, so Web2 came and it gave the freedom to people to produce the content and like share whatever they wanted to share. But this was having mainly centralization. The another technology which Web2 introduced was cloud computing, right? Moving forward, this era gave birth to Web3, where people demanded that we should be having our own rights to execute our own whatever data we are able to read and write, right? So basically here in the Web3 space, people are looking out for decentralization, as mentioned by him, and then people also are looking out for another technology which is beyond cloud computing. I would like to know if anyone from the audience know about it. So, moving further, now we are talking about the actual stuff, like what exactly the Web3 stack looks like. Okay, so the ground floor, the building block of the Web3 begins with the infrastructure layer, which is the layer 0 of the pyramid. Okay, so if you visualize a pyramid in your mind, if you have to consider something as a base, then layer 0 is the base. And on top of layer 0, the infrastructure layer, comes protocols, which are layer 1s, right? And on top of these layer 1 protocols, there comes utilities, which are layer 2, which have certain, criteria or functionalities, maybe to improvise the layer 1s, or maybe to add on something to the layer 1s, right? And then on top of these utilities, there comes services. So services could be something like notification service, right? Which you usually receive. Let's say if I send you an email and you instantly receive a notification on your mobile that you have got an email from a sender named Harsh, right? So this could be a service within Web3 space. And anyone knows about any such service like that? Anyone? Chetraj? Correct. Push protocol. So push protocol is one of like that services. They were called before Ethereum push notification service, but now they have rebranded themselves as push or cross-chain operator. But now the last layer comes layer 4 applications, where actual dApps are deployed, decentralized dApps, and this is the top layer of the pyramid. And hereby, and all the front-end users are actually interacting with the top layer. Not all, but like mostly who are transitioning from Web 2 to Web 3. So they don't actually want to deep down or take a deep dive into the whole Web 3 stack and go till the base. So for that, people like maybe my parents who just wants to get the work done, for them the layer 4 is the layer 4 of interaction. So now what comes on the layer 0, because I told you I'm here going to talk about Web3 infrastructure, and the points I will be covering under the Web3 infrastructure are highlighted over here. So we have network. What exactly happens with the network? So what do you mean by network within the Web3 space? Anyone would like to answer? Anyone. Like, connection between the two nodes. chalo. Maybe if they start serving the starters, we get some Josh. But yeah, let's continue. So basically here, network defines that we are going to establish computational nodes which are going to act like a route to pass the information and forming a network altogether, right? So this is actually what means by network. And here, basically the difference between Web2 network and Web3 network is Web2 network is mostly decentralized. Web2 network is mostly centralized. You have a central authority which is controlling the whole network, but
here in Web3 you have nodes which are completely decentralized, and every user node has a right how they want their privacy rules to be set and how they want to share and execute the data and information they are providing to the network. Right. Next, we go with the virtualization. So virtualization doesn't make much difference between Web2 and Web3 space. Uh, it's absolutely same with a couple of difference, like within virtualization in Web3 space, we also introduce the consensus mechanisms, and these consensus mechanisms actually help in deciding or setting up the rules for how the network is going to operate and how the network is going to function. Okay. And then we have tokens. So tokens are basically rewards for the participants of the network. So let's say if I'm a user and I make my laptop as a node and I want to serve it as a node to maybe produce some blocks of Bitcoin or maybe produce some blocks of Ethereum to validate some nodes or to validate whether this transaction is real or fake. So I am looking forward to be incentivized. And how I am going to be incentivized is by tokens rewarded by that particular network whom I am serving as a node, right? So that's the reason we introduced the concepts of token mainly, and this is how crypto and decentralization in the Web3 goes hand to hand. Cool. And then lastly comes the storage. So storage here is the difference that in Web2 space, obviously you get a better storage, better accessibility to that storage, but yeah, of course, your data is centralized. So tomorrow, if Google Drive wants to delete, all of your data, it can do it in an instant. But let's say you host your data on IPFS, which is a decentralized storage solution on the Web3, a decentralized Web3 platform, storage platform, or a protocol where you can store your files and make them decentralized. So thereby, the data is absolutely owned by you, and it never gets deleted. And basically, it's not destroyed until the apocalypse happens, right? The second fifth comes computing, and within computing, basically here you are setting up the consensus mechanisms like the contracts and all. The network is going. Basically, the nodes in the networks are going to execute these contracts and all of those rules. So that's taken care with the computation. But yeah, there are certain more features now added into the Web3 computation. For example, there is a render protocol where when you go, it actually provides you a cluster of decentralized GPUs, right? So let's say if you want to render a very high quality 3D graphic, or maybe you want to render some 8K resolution video which is completely built on some complex softwares like Blender, Unreal Engine, something like that, and you need more than 60 to 100 graphic cards, and you yourself can't afford that much of graphic cards. So basically, you go to this protocol, you pay per use, you get those graphic cards for the time being when you are using and get your job done. So this is where actually the scale of computing within the Web3 is exploding, right? It's setting up the limits, and the sky is going higher and higher in upcoming days. And now there are a lot of protocols which allow you to do real-time computes, like Lightbeer is there, which lets you to stream videos on the Web3 way, and there are many more. And lastly, talking about the nodes, already I explained the nodes, the concept of the node. So node is an individual machine or system or user who is helping in building up the network and is actually helping in executing things in a very, very efficient way. So basically you can say if the network is a house, the node is a brick which is used to build that particular house.
And for building a particular house, you may require 50 bricks or you may require more than 5 lakh bricks. It entirely depends on the size and the type of house you are building. And then I'm also going to give you some examples of layer 3 services because these are going to be helpful for you at the moment. And then like within this growth technology, you have tools for managing community, for doing messaging, day-to-day messaging, for attribution, then for community automation. Maybe Amit might be using one of them. Then you have analytics, just like the Web2 analytics for the Web3 space. You have CRMs, just like what is there with the Web2 space. And then you have incentives and reward platforms and ad network, and project discovery, and things like that. So lastly, there's a way to connect with me is to scan this QR code and reach out to me if you anytime would love to connect over. And yeah, a big thanks to Web3 Indore community for hearing my talk so patiently. At Reef Chain. Reef Chain is a layer 1 blockchain. It's EVM compatible, so just like Ethereum, Solana, Reef is a blockchain, so you can build dApps and other cool stuff on Reef. Yeah, so that's a bit about me and Reef. So I'm gonna move on to the topic that we have for the session. So yeah, if you're interested, you can follow up Reef socials. You can follow me. Yeah, so about DevRel. So just a question for you guys: how many of you are developers here? Web 2, Web 3. Nice. Oh, okay. We do have a lot of developers. So, any clue that you have what DevRel is? Any clue? Anyone? Okay. Can we have the mic? That basically means developer relations. Basically, the person who interacts with the community and also has the technical background. So, if that means suppose there's any new innovation in Web3 or any other community, then he presents the same to the audience. He's able to communicate to the public as well as he is able to perform the technical side of it. Nice. So that's a really good description. So yeah, DevRel stands for developer relations. Okay. So this is like a basic definition. So like you mentioned, what's your name, by the way? Ankit. So Ankit, like you mentioned, DevRel do have like a technical background. They also have like a product background. They are the front face, like me. They are the front face representing the product and the company in different events. And yeah, so yeah, I'll just read it out. So DevRels are professionals engaging with developers as their primary users. So for DevRels, the primary users are the developers. That's why it's called developer relations. Yeah, so I'm gonna tell you a bit more about DevRel. So basically, developer relations is all about developer experience, just like user experience. Developer experience is a crucial part of being a DevRel. So DevRel basically has four main things that they work on. It's developer marketing, developer education, developer success, and developer community. I'm going to tell you more about it later when I describe about my journey as a DevRel. So yeah, these are the four things that DevRel focuses on. It's pretty like self-explanatory. So I'm going to tell you more about it later. Uh, so yeah, what kind of skills do you need to become a DevRel? I'm not sure, uh, how many people would like are looking forward to work as a DevRel or are interested in knowing more about DevRel. Like, are there is there someone who is interested in being a DevRel? We have a lot of DevRels here. So we have Uttam here. We have Harsh, who is a developer advocate. Uh, okay, I don't think there's anyone. So anyways, the skills that you need for DevRel, the first one is to have like a technical background, like Ankit mentioned. So it's good to have like a developer focused experience. So if you're in college, if you're building apps in Web2, that's a really good start, right? So you can
start building on Web3 as well. So a developer experience is a crucial thing, majorly if you want to work as a developer in Web3. It's a good idea to if you love documentations, if you love creating documentations, if you like to go through documentation, then like going through documentations, writing documentation, writing technical blogs and articles. That is another crucial skill that you need to be a DevRel. You are going to be the front face of the organization. So you're going to be traveling to a lot of places, not just in your country, to like foreign countries as well. So you will go to Dubai, Canada, US, represent your firm, and yeah, you get to do these kind of amazing events, meet such an amazing crowd. So yeah, you're gonna be the front face. You're gonna do events. You're gonna do workshops. You're gonna do Twitter Spaces. So be ready if you're planning to do be a DevRel. Uh, like you need to be really vocal about everything. And yeah, the last thing which I feel is really important is you should be like a strategy focused person. So, and you should have like a product mindset. So basically, every DevRel should know in detail about the product they are working on. It's only then that they can help out developers, right? So knowing a product is a crucial part of being a DevRel. And apart from that, you need to think strategically. You need to collaborate with your tech team, your PT team, your sales team, and like various teams in your hello, yeah, in your organization. So yeah, strategy planning and product is another crucial skill. So yeah, all in all, like you should have an enthusiasm for your product, for your company that you're working for, and like you should have an enthusiasm for the space as a whole. So yeah, um, this is just, I don't know if you can see it or not. So I've put out some screenshots from a job posting for a DevRel that I saw recently. So the points that I mentioned, all of them like check mark here. So the job basically requires you to have a decent developer experience. You should be able to like write technical documentations. You are going to be the front face, so you are going to represent the company in conferences, hackathons, and meeting amazing developers. Some people do get to meet Vitalik as well, so yeah, that is cool. And again, like there will be strategy and product planning that's going to happen. Uh, I don't think you would be able to see it here, but yeah, that's what the job description basically entails. So yeah, the next question is how do you become a DevRel? How do you do like how do you get these skills? How do you uh, like start working as a DevRel? Even if you're not working as a DevRel right now, how can you start? So the basic thing is just to start small. Don't think big. Just do small things. That's how I started. Um, Learn about Web3. Start building something. Even if you don't know Solidity or Rust or anything, just take a Python or something else. Just start building some dashboards. Okay, and try to like go through documentations and stuff. Watch some YouTube videos. Watch some reels or something, and try to consume content. Learn more about Web3. Uh, Once you're done doing that, you can start creating your own content. So you can like write blogs and stuff, go on Twitter, just rant about everything you know about Web3, and just go to YouTube, create some content for the people. Uh, Join communities. So we have a lot of communities people here. We have Aryan, we have Aditi ma'am. So there are a lot of communities people here. So I'm pretty sure they're going to tell you more about communities later. So how to join a community and what are communities. So you need to join a community, some kind of community to start getting to know about what Web3 is. And the last thing, which is really, really important in Web3, brand yourself out. So just showcase your work. Uttam does a really great job at that. He is really active on Twitter. So yeah, just showcase your work on Twitter, LinkedIn, or other platforms so that people get to know about you. Like so, that's how you can start your journey towards being a DevRel. So yeah, I'm just gonna give you a case study. It's my journey basically to be a DevRel. So I graduated like in 2020. Uh,
I was like a developer, but I did a lot of other things as well. So I learned like I did like 3 years of development during college. Uh, yeah, I got placed into a product company, like in the product role. Therein, I learned like about user personas and like engaging with people in the community. Okay, so I was in direct touch with users. Users persona was something really important. I categorize users on the basis of that. So that's what I learned in product management. Then I work for a hedge fund as like a algo trader. So I manage like $10 million in assets, and I work with a psychologist. Thank you. I also work like with a mental health firm in Indore. I was the intern there. I worked with them. So therein I learned like analytics and strategies, and also like human psychology. So after that, I started learning about Web3. So I talked to a friend who was working with Ethereum back then. I asked them really silly questions about Web3. But yeah, that's how I started for 2, 3 months. I was just like consuming every content possible for Web3. After that, I did like a lot of hackathons. I went to Gitcoin. I created a really shitty dashboard and I submitted it. I didn't win anything, but yeah, that gave me kind of an inspiration to move ahead, do more hackathons. So after that, there was no stopping. I did like 10 or 12 hackathons, and I have won almost all of them. And that's how I got kind of some recognition from a company I work with later on. After that, I got to work with the Bitcoin DAO. So Bitcoin is one of the major Web3 companies, you can say. So they do have a DAO. So I worked with Bitcoin DAO and I worked on my own product as well. So during that, I learned a lot. I learned more about communities. So I was involved in a lot of Bitcoin communities. I learned a more about development. How do you create your own product in Web3? I got in touch with some mentors who guided me through that product development process. Um, then, okay, I don't know if you can see it. So basically, the hackathons that I told you about, so Covalent was a sponsor of a lot of hackathons. So Aryan is gonna present you guys about Covalent. Covalent is a sponsor as well. I got a DM from the CEO of Covalent that they have an opening which I might be interested in. And yeah, it worked out and I got a DevRel position at Covalent there. And yeah, I had a good time working there for sure. And after that, again, Twitter helped me out. So I don't know how it happened, but someone from Sotovo Mandao reached out to me that they have a DevRel position at ReefShame. So again, through Twitter, I got connected. There were like one interview that happened, and I got a job at Reef as a lead DevRel. So yeah, that's been my journey. Uh, so majorly, it's all about learning whatever comes your way, focusing on certain skills. Every job gives you like different set of skills. Some at some places you learn about development, at some places you learn about community, you learn about human psychology and like different aspects. So I mean, whatever you do, just try to extract some value out of it. Even if you're listening to me, I hope you try to like learn something new or like get motivated to learn something new. So um, yeah, so okay, this got messed up. Anyways, so these are some resources. Okay, so yeah, just a fun fact: Apple was the first company to have like a proper developers program, like developer evangelist program. But like Web3 is making it really mainstream. So in Web3, you'll find a lot of developer like relations role opening up. So these are like some resources for you guys. I'm gonna share it over to you. I'm just gonna tell you how I'm gonna share it in the next slide. So yeah, DevRel Space is like a really cool Notion board where you can find a lot of resources related to developer relations. Uh, DevRel.page, you can go to that website. There are a lot of podcasts with some really cool DevRels. Okay,
you can go to this Telegram community where you can find out jobs and stuff. Okay, and you should definitely follow David. So he is like the coolest guy in Devrel that I have ever seen. So do follow him. I'll share all these resources with you. So yeah, this is kind of like a surprise for you guys. So we are officially launching the Reef India community. So um, to join this community, okay, like you have a printout of this QR on the chairs as well. If you want to join, it's everywhere around the venue. So do join this community. There are a lot of amazing things coming up at Reef, and yeah, we are doing an online hackathon soon as well. So we are gonna be posting out all the details about it here, and we are going to East India, and we are going to sponsor some people to come along with us. So yeah, do join this community. All the updates are going to be there. So, yeah, thanks for participating in this small activity. Yeah, again, like I am Aryan, and I'm not a dev, and I look after like community lead at Connect India. So, yeah, let's move to agenda. Just wanted to test like how many of you are already in Web3 space, like who are building something. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, lot of people. Okay, okay. So how many of you have wallets, their own MetaMask wallets? Okay, yeah, a lot of people have. Like around 40%. And how many of you have used bridges? Bridges, okay. Okay, which bridge you have used? Which? Okay, okay. So what are bridges? And anyone would like to answer that? Anyone? Okay, in general, what is bridge? Not in Web3 terms. What is bridge? So basically, bridge is to connect two different things. So if we take a river, so that can be two different sides of river. And in terms of Web3, bridge is basically to connect two different chains. So for an example, if there is an Ethereum chain and other one is Solana, so bridge can help you to connect these two different chains. Exactly. Yeah. Let's clap. All right. So yeah, what is Connect? Okay. So basically, Connect is a Web3 infrastructure tool, basically a bridging protocol, and that allow users to transfer their tokens or data, through chains and rollups, very secure manner. Okay, so that's basic about Connect. So yeah, if you want to check out this, like yeah, Connect is a network for fast, trustless communication between chains and rollups. How many of you know what are rollups? You know, yeah. I guess rollups are to convert two different tokens in between. Yeah, like for example, Uh, I remember that, but I have read somewhere. Optimism. it's a roll up, right? Yeah. Yeah, so like layered. Yeah. So yeah, that's about Connect, and what we are aiming for is we want users to use Bridge, like, and we don't want them to think about like what chain they are using, okay, unless they want to, okay. So that's basic about Connect, and why Connect? Security. So we use modular interoperability. I won't go deeper into this because it's going to be super technical. And yeah, well, yeah. Second is extensible. Like any one of you know meaning of extensible? Extensible in general. No, something that can extend. That is extendable, right? So, like this connects bridge are extendable. That's why connects composability.
lot of Web3 folks know the meaning of composability. What is that? Composability. Come on. Are you all sleeping again? Composability. Nobody knows that. I'm really surprised. So composability is basically using the existing mechanisms or the networks and building something on top of it, like applications, right? Exactly, exactly. So extending some functionality. Yeah. Okay. Modularity. What is that? Just 1 second. Anyone from this side? No. Modularity. Okay. How many of you played Lego game? Okay. So you know what is like how this Lego work? We break down things into small pieces, right? So it's like that modularity, right? So maybe if you want to use certain features of any protocol, you can use that in a small pieces, something like that. Okay. Yeah, it's also future proof. Like whatever we are building, that is like something that you can also use in future, and like ease of implementation is as well. Like you can implement that in very easiest form. Yeah. So what you can build using Connect, again, I won't go too much deep into this, but yeah, these are like three things. I want you all to pay attention here because this could be a question from the quizzes. Okay. So yeah, like X apps are futures and exchange are DeFi. So any swap, you can swap any token. Maybe if that token is on Polygon, or you want to swap that token on Cosmos chain, you can do that using this Connect bridge. And lending protocol, like you can create a deposit chain A and borrowing from chain B. This is also what you can do using Connect. Like exchange, this is a feature of Connect. And yeah, yield aggregator, like farming and harvesting is something that you can also do. Yeah. NFT, yeah, NFT, this is something like I find really interesting in this Connect. How many of you are NFT collector? One. Only one in Indore. No NFT. Okay, how many of you know POAP? I'm sure, like, if you have attended any Twitter Space session, like what they used to do is they distribute POAP. So that is also NFT, sort of NFT. Okay, so you want me to try that activity once again? Okay, no, nobody has collected any NFT. What is NFT? Okay, non-fungible token. So yeah, in general, that is a JPEG for me. And yeah, like fractional. What you can do is you can fractionalize blue chip or cheaper chains. What does fractionalize means? Dividing something. Okay, so maybe and of any collection of any NFT, you can change that to another chain by using connects that create a representation of that NFT on another chain. Yeah, new mint on L2 and move to L1 for security reason. Maybe if you wanna use, like, if you own any blue chip NFT like Bored Ape, CryptoPunk, any NFT, if you want, like, there are a lot of lending protocols, NFT lending protocols are there, and you wanna switch that to another chain, you can do that using Connect. And yeah, gated community, if you are a community manager, you probably know like how this gated community work on Discord server. So yeah, uh, ex- yeah, infrastructure, uh, DAO tooling. Like you can use this exchange in DAO tooling and oracles, while wallet identifying system. This is what you can do using like uh, Connect. So basically, three things.
DeFi, NFT, and infrastructure. Okay. So what's next? How many of you are excited about ETH India? How many of you are coming? How many of you are participating in that? How many of you got confirmation? No one? Hmm? No free tickets. Like we are organizing Hacker House. Okay, so if anyone, any Web3 developer or anyone who use Connect to build something, we will provide accommodation, mentorship, and exclusive bounty up to $1,500. So yeah, like if you are interested in that, you can scan this code, and there is a Hacker House link, and you can apply for that. So yeah, as promised, I keep this very, very short. Okay, and now we can move for the refreshment. If you have any question related to community or anything, feel free to reach out to me on this Twitter, Telegram, and Discord. Thank you so much for participating in an activity and bearing me. Yeah. Coindcx की तरफ से ये इवेंट है और फिलहाल में एक स्पीकर सेशन यहाँ पे हो चुका है, दूसरा स्पीकर सेशन यहाँ पे आने वाला है और उससे पहले यहाँ पे चल रही है थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट्स। तो मैं आप लोगों को ज़रा एक लुक पिक यहाँ पे दिखा देता हूँ। और अगर आप देखें तो सब लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि देखो मैं सारी चीज़ें फुल्ली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मे बी ब्लॉग में तो पूरा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप रॉ क्लिप्स चाहते हो तो मैं उसके लिए एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, बट एक अच्छा खासा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। Web3 जानना चाहते हो, ब्रिजेस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। तो स्टे ट्यून रहो, पूरा ब्लॉग देखते रहो जिससे कि आपको और ज़्यादा अपडेट मिल सके। एंड यस, मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेंगी। तो एंजॉय करिए आपके फ़ोन से, अगर आप इस इवेंट को अटेंड नहीं भी कर पाए तो। Hey, hi, finally a girl up on the stage. Yay. Okay, so as I told starting में, मैं थोड़ा story focused, what I did, जिस वजह से मैं यहाँ हूँ, how did I did, आप लोग कैसे वो कर सकते हो? Because see, a lot of people can come up here and tell you what to do, but जब तक you yourself are not gonna do something on your own, we were talking about slangs in Web3. सबसे important slang है DYOR. Do your own research. Nobody can spoon feed you. Nobody can tell you what to do. You will have to sit up in front of the laptop screen, Google what is Web3, Google how to bag an internship or a developer position or whatever you want yourself for. And that is how actually you're gonna do something. So first step, हमेशा आपकी वजह से, like it has to be from you. And now coming to the content that I have to share, I hope you all will like the first slide. Okay, so of course, I'm going to talk about the company, I'm going to talk about my journey, but Bitcoin is the hero, the star today. So from there, I wasn't okay with, just chatting with the people on the community, asking what are your doubts, the update is coming, blah, blah. I wanted to do something more. I just forced myself into marketing stand-ups. I gave ideas. That's when I got promoted to the marketing team. From there to marketing head, from leading the marketing campaigns, app launches, and from there community, social media, and trust me, community in Web3 we all talk about it's the core and everything. It actually gives you a plethora of networking opportunities, and network is quite literally your net worth. The more people you know, the more people you help out, the more people will be there to help you out. So go out there, even if it feels you don't belong there, trust me, nobody does. So you'll have to make a place for yourself there. So this is something how it's been a year for me in Web3, and I sort of just keep scratching opportunities, creating a place for myself, and made opportunities for my own when nobody else gave it to me. The third was timestamp server. How do you actually make the other miner know कि yeah, this transaction happened? So let's say I am telling my mom कि yeah, मैं mall गई थी, उसके बाद मैं restaurant में गई थी, फिर मैंने ये किया था. Instead of just telling her vaguely all of this information and making her believe that I was not partying out all night, I'll just give her timestamps. ये देखो इस टाइम पे मैं यहाँ थी, इस टाइम पे मैं यहाँ थी, because timestamps are literally like proofs of
what the data and when the data has been, and how was it there, is it valid or invalid. The next is proof of work. Of course, how are you gonna identify if that one miner is legit or not? You're gonna make him or her do a lot of work, which is called proof of work. So it's like one CPU, one vote. I'm giving a vote that yes, this transaction is valid. It can go forward. I have done all of this work to validate this transaction. The next is network. Of course, he talks about how will we be creating a network of nodes, and the longest chain, which has the most people saying yes, it happened, that is gonna be validated, and only that transaction will be approved. Incentive, like why will I do all of this proof of work and longest chain if I'm not getting something? The transaction fees, the gas fees that we talk about, it is gonna go for the miners as an incentive for the CPU power and the electricity that they use. Then it's privacy. So we all I've had my professors ask me this question कि blockchain में सब open है, open data transactions है, तो how are you securing the privacy? आई विल नो क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, 8 बिटकॉइंस किसको किसी कहीं जा रहे हैं, बट किसको जा रहे हैं आई वोंट नो इट. सो वी कैन सी एवरीथिंग बट वी कैन नॉट लोकेट. लाइक वील गेट टू नो ओके दिस ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग, बट कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, वी कैन नॉट एवर नो दैट. So that is how we secure privacy. Then we have the conclusion where he talks about electronic transitions without trust. And the conclusion has such a beautiful paragraph where, even reading it feels like, how is this even possible? They're building a trustless system of electronic transition where actual money is involved. But this is the beauty of blockchain, right? So this was we actually covered the Bitcoin white paper, guys. Now, okay, fine, but why crypto? So I am, I'm a Gary Vee fan. I am a Balaji Srinivasan fan. I watch a lot of podcasts and their talks about cryptocurrency, Bitcoin, and all of the points that I have here, these are not mine, these are theirs, but the ones that I love and want to talk about. Banks around the world are collapsing, and Bitcoin cannot collapse. The people who understand this are going to change the world. Bitboy is a famous influencer in cryptocurrency. He quoted this thing. Then we have crypto. I believe crypto is revolutionizing and it's a rebellion. We are all fighting against the government for it. They don't want to give us this freedom. We want the freedom. It's an actual rebellion that the citizens are fighting for. Bitcoin is civilization. Balaji says that Bitcoin is civilization. It is making a country civil. But how? A Indian, a Nigerian, anybody can create a DeFi protocol without paying one single penny to an American lawyer. There is no discrimination. Anybody can build on it because everybody owns a part of the internet. This is how Bitcoin is helping in civilization. The Ukraine war happened. Nobody was there but the decentralized webs and decentralized currency to help people to have some money. The prime minister presidents cannot rule or collapse or shut down Bitcoin. That is how Bitcoin is helping in civilization. Protecting human rights, as I mentioned, Putin can do a lot of things, but he cannot freeze a Bitcoin account. Provides currency stability. We all know inflation. After a few years, even 1 million is not going to be a very huge amount. But crypto has algorithmic cryptography. We can locate and map what Bitcoin is going to be by this and by this amount of time. So we can stabilize the currency and the hyperinflation rates that's been going on throughout the world. It guarantees fairness, as mentioned. The center of innovation is on chain. So Google is provocating. Don't be evil. Don't try to theft people and whatever the infringements are happening in the system. But crypto is literally can't be evil because even to leak all the transactions in a blockchain, 51% of the nodes have to be faulty. And even if they are, there are a lot of things involved to actually break a blockchain. So you cannot do that. It's not like you're teaching people to be kind, don't be evil. So this statement I find it really powerful about cryptocurrency when you're comparing it. So okay, now coming to the company which I'm working for.
Okay, so it's called cruise finance. I'm sure a lot of you people invest in crypto, and even if you don't, because of the fear of that your money is gonna go down, it's gonna collapse. Trust me, this is the app, this is the name that you need. So we are building an asset hedging DeFi protocol, a hedging protocol for your crypto portfolio. We are going to be setting a price floor. We are going to be setting a limit that even if the market goes below it and you have staked on our platform, you have protected your crypto here, you're going to be making profit when the market is crashing. Did anybody heard what I just say? Like, is it actually possible? Yeah, it is. A lot of tech has been involved, and I'll try my best to explain it to you guys in the next slides. So, what we basically do is we'll invite you to stake on our platform because we'll need collateral and we'll need liquidity. Once you'll stake on our platform, you will protect your assets by let's say you stake 100 Ethereum on our platform. Then we'll be giving you 100 CR tokens, which are cruise tokens, protected tokens, whose price are not going to fall beyond the price floor. So let's say we set a limit कि इसके नीचे इथेरियम का प्राइस गया तो भी हम आपको उतना देंगे वापस टेक and the rest the losses we are going to be making it up for you. How? I'm going to be explaining it. So you'll be protecting, you'll be getting those CR tokens जिसको आप कहीं भी use कर सकते हो for staking, lending, borrowing, swapping, anything. So actually you are staking, but you also have the same amount of crypto with you for another use. And then you will be using it for a lot of things, which we'll be talking about. So Cruise is still in the beta version. Like we are going to be launching the beta version in just a few days. This is some snapshots that how the app is going to be looking like. I'm not sure if it's visible, but I'll try. So this on the right side, you'll be connecting your MetaMask wallet. You'll be having a Cruise NFT, which will enable you to, access the beta version and the app. You'll be connecting a MetaMask. Let's say I want to stake and protect my 0.01 ETH. You will be entering that amount. I'll be giving you back 0.01 CR each, which you will be using for other reasons. And we'll be doing perpetual hedging on your behalf. We'll be involved, we are collaborating with Aave, with DYDX. We'll be short selling, we'll be doing perpetual hedging on your behalf and shorting the position, taking care of the market. You just have to stake your tokens and give us the collateral, give us the liquidity, so we can take loans on your behalf from Aave and swap it from DYDX, and basically gives you money still when the market is crashing. So after you have entered the amount, then this is how it's going to be looking like. You'll be protecting 0.01 ETH, and the 0.01 ETH will be given back to your MetaMask wallet, and this is how it's going to be looking like. If you guys want to test this beta version, we are just closing in 1 or 2 days when we'll be stopping our registration for beta version. If you want to test it, go visit our socials, like I'll be sharing them, and we'll be giving you free Go Early ETH 2 to test it out if you guys don't have the ETH, and you can actually test the product and let us know how do you like. And I guess that's by the end of it. This is our website, our Twitter, Discord. Do scan it and join our socials. And we are having our second community call on Monday, that is tomorrow, where we'll be explaining a lot on detail about the beta version and how actually the things are gonna be like and things are gonna be looking like. Okay, I guess that's pretty much it. Hope you guys like. I'm looking forward to all of the people who still had that doubt in their mind and their heart that maybe we are still not good enough to apply for an internship or a job. Trust me, nobody is. Nobody is better than you to apply for that position. So go for it. And beyond that, do test out the product. It's amazing. It's the first of a kind in the crypto world. We'll be protecting your crypto. I mean, like, what is the asset that does not crashes? So I hope you all found this session value adding. Thank you. We have some lines, some welcoming lines for him. Ginny? Each pyramid needs someone at the top. The same can be said about our team. So I am very thrilled to we have with us Mr. Sumit Gupta sir, and I don't think we need any introduction about him. So maybe have a huge round of applause for him. Huge round of applause.
सो फिलहाल में सुमित गुप्ता सर जो Coindcx के फाउंडर हैं वो बेसिकली यहाँ पे आ चुके हैं और इस तरफ में आप देख सकते हो बैकेंड में हमें देखने को वहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलो मैं जाता हूँ पास में और देखता हूँ कि क्या क्या रिकॉर्ड कर पाते हैं। हाउ इज द मीटअप गोइंग ऑन? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, एक क्विक, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग वन ऑफ दीज लोकल चैप्टर्स एंड हम लोग टीम में डिस्कशन करते रहते हैं कि एट द कोर ऑफ क्रिप्टो, हार्ट ऑफ क्रिप्टो कम्युनिटी होती है, मतलब दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। अगर बिटकॉइन की कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो कोई व्हाइट पेपर ही रहता हो, राइट? तो इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑल्सो हैव चैप्टर्स और ऑफलाइन इवेंट्स लाइक दिस, बिकॉज बहुत लोग ऑनलाइन फोकस करते हैं बिकॉज आप फटाफट ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, बट रियल एक्शन मैदान पे ना आपको जब देखते हो तब पता चलता है। एंड मेरे को लगभग हो गया है 7-8 साल जब से आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दिस स्पेस। बहुत सारी लर्निंग मेरी पर्सनली, 5-6 दोस्त वगैरह बैठे हैं उनके साथ 6-6 घंटे 8-8 घंटे डिस्कशन करके वैसे हुई है। और जो लोग बिल्ड कर रहे हैं, मैं भी एवरीडे सीखता हूँ, तो उनके साथ आप सुनते हो कि वो क्या बना रहे हैं, उससे भी होती है। तो आई थिंक ऐसे इवेंट से वो सीखने को ज्यादा मिलता है, विच इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। यू विल नॉट learn all of these stuff on Telegram communities or Twitter because there's a lot of noise, बहुत ज्यादा noise है वहाँ पे। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि एक बार ऐसे कोई मीटअप में अटेंड करूंगा। मैं तुमसे बोलता रहता था कि यार मुझे कहाँ पे हो रहा है, दिस इज वेरी मच रीचेबल, जस्ट सो दैट एवरीवन नोज इंदौर, एवरीवन कैन सी मी, राइट? हाँ, तो इंदौर मेरा होम टाउन है और बहुत ही दिल के करीब भी है इंदौर। आई लव दिस सिटी, आई लव एवरीथिंग अबाउट द सिटी। एंड जो पहले जो हुआ था वहाँ पे अच्छा खासा टर्नआउट था, बहुत सारे लोग आए थे, तो लोग ट्विटर वगैरह पे डाल रहे थे। आई एक्चुअली गेट गूज़बम्प्स एट टाइम्स जब मैं देखता हूँ कि अच्छा ठीक है, इतना ज्यादा इंदौर में एनर्जी है अबाउट दिस स्पेस। सो अच्छा, तो इसलिए मैं आना चाह रहा था। और एक मेरे को जस्ट जानना है कितने लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, सो दैट वो इतने सारे लोग स्टूडेंट्स हैं। और आप लोग क्या करते हो? डेवलपमेंट, लाइक यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट या फिर यू आर वर्किंग इन अ कंपनी व्हिच इज इन दिस स्पेस? इंटर्नशिप्स वगैरह भी करते हो? वेरी गुड, अच्छा तरीका है। एंड बाकी लोग, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट स्टूडेंट्स बट developers working on a project, building your own thing in this space? How many people are doing a job in some of the companies except Coindcx? अच्छा, आप लोग जॉब करते हैं space? Got it. And what about other people, like और किस टाइप के लोग आए हैं? मुझे जानना है out of curiosity. Content creators. हाँ? फाउंडर्स ऑफ कोर्स, वही बिल्डर। कौन कौन बिल्डर्स है? बिल्डर्स टाइप से भी लोग हैं क्या यहाँ पे? अच्छा, नहीं अच्छा है यार, वेरी वेरी गुड टाइम। मार्केट में लोग बोलते हैं कि अच्छा प्राइस अभी बोरिंग चल रहा है, बट मेरे को लगता है यही टाइम है। दिस इज द टाइम बिकॉज व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप इट विल नॉट गिव यू टाइम टू बिल्ड समथिंग, यू विल रन ऑल द टाइम। आई कुड नॉट अफोर्ड 2021 में जब वो भाग रहा था ना प्राइस, आई कुड नॉट अफोर्ड टू लुक लेफ्ट राइट बैक, बस भागे जा रहे हैं, यूजर्स आ रहे हैं, लाख 1.5 लाख लोग डेली के, टाइम ही नहीं मिल रहा, 8 घंटे काम चल रहा है। बट इस टाइम पे 2018 में जब लॉन्च किया था तब हमने 2 साल कोई पूछता भी नहीं था, मतलब अभी तो लोग बहुत खैर जानते हैं, उस टाइम पे लोग जानने के तो छोड़ो, बोलते थे क्या कर रहा है यार, मतलब क्यों कर रहा है, अच्छा खासा आईटी वगैरह कर रखा है, जॉब करो कोई अच्छे से। तो वो फिर समय बताता है, मतलब करे जाओ, इफ यू बिलीव इन इट तो ठीक है, मतलब विल I cannot see, of course regulation is one thing, उसमें फाइट चल रही है, होगा, मतलब I believe that the space is going to get regulated. I think all of us believe that, right? I don't know when, but I can very confidently say कि regulation तो आएगा ही आएगा। जैसे भी चल रहा है ऐसे तो नहीं रह सकता। अगर आप 3 साल 5 साल देखो, या तो नहीं चलेगा या तो चलेगा। अगर वो नहीं चलना होता तब तो हो चुका होता। नाउ इट इज टू बिग, अब तो रेगुलेशन आना ही पड़ेगा। 27 मिलियन कस्टमर्स, 27 मिलियन इंडिया में, 27-28 मिलियन हो गए, 100 मिलियन तो गलत नंबर है। मैंने अनफोल्ड हुआ था हमारा, आई डोंट नो किसी ने अटेंड किया कि नहीं किया, हमने बैंगलोर में किया था, बहुत अच्छा इवेंट हुआ था। एंड
उसमें एक होता है ना, जैसे लाइक कॉइनडेक्स इंडिया का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न है। अब नीरज, और नीरज मेरा को-फाउंडर है, वो भी कल आया हुआ था बाय द वे। नीरज वाज इन इंदौर, तो इतना क्लोज है हम इंदौर से। तो वो आया हुआ था यहाँ पे, एंड हम लोग डिस्कशन करते रहते कभी 2-3 घंटे कि अब क्या कर सकते हैं यार, लाइक कैसे क्या चीजें करें। तो बस 5 साल पहले हम भी ऐसी, मैं भी ऐसी था, मतलब आई वाज लाइक, नाम तो छोड़ा, मतलब किसी को उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था भी नहीं। कम्युनिटी कोर है ना इसका, एंड एनर्जी बहुत है। मैं तो ओपनली भी बोलता हूँ कि मतलब इवेंचुअली इंदौर ही रहेंगे अपन। इंदौर में सब है, मतलब अच्छा खाना है, अच्छे लोग हैं, सब बढ़िया, सारी फैसिलिटीज हैं। व्हाई नॉट? ट्रैफिक नहीं है, 15 मिनट में कहीं से कहीं पहुंच जाओ पूरे शहर में, तो बहुत अच्छी जगह है। एंड इंदौर बिल्डिंग फेज में है, मतलब हमें लगता है कि अभी ठीक है, यूजर्स वगैरह स्लो आ रहे हैं, एक्शन है बट स्लो है। तब तक बना लो जितना बनाना है, बिकॉज जब मार्केट भागेगा तब आपको टाइम नहीं मिलेगा, तब आप उनको सर्व करने में बिजी रहोगे ऑलवेज। तो अभी अच्छा टाइम है कि आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। तो अभी बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, राइट, बिल्ड कर रहे हैं, जो कि बाद में बहुत कम आएगी। और रेगुलेशन साइड से मेरे को लगता है ये टेम्पररी अप्स एंड डाउन चलता रहता है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ थिंग। बट एज लॉन्ग एज अगर जूम आउट करेंगे और फिर आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा पैटर्न कहाँ जाता है, राइट। एंड आपको अगर पैटर्न पता चल जाएगा तो आपको पता अच्छा कहाँ स्पेस जाने वाला है, एंड देन यू विल नो, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। दैट इज व्हाट, इट्स नॉट इजी टू रन अ स्टार्टअप इन इंडिया, एंड रनिंग अ क्रिप्टो स्टार्टअप इन इंडिया इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, राइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लॉन्ग टर्म सोचो थोड़ा, कि शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, और वही करते हैं हम, मतलब। एंड ग्रास रूट लेवल पे जब इम्पैक्ट होता है ना, तो दैट इज व्हाट मेक्स अस हैप्पी, दैट्स अ गुड इम्पैक्ट। तो वही है। बाकी तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा ज्ञान भी नहीं दूंगा। मैं भी सीख ही रहा हूँ। आई एम ऑल्सो हेयर टू लर्न एंड टॉक टू पीपल, लोग क्या बना रहे हैं, कैसा ऐसा, शायद कुछ चीजें मेरे को सीखने को मिल जाए। बट वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। एंड इंदौर को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, इंदौर की वेब3 कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। दैट इज वन थिंग जो आप अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं, इफ यू फाइंड एनीवन। तो अभी आज आई डोंट नो कितने, 150-200 लोग होंगे। लास्ट टाइम आई थिंक 70 लोग आए थे, अभी और बढ़ा, ये चीज कंटिन्यू रही तो 1000 भी हो सकते हैं, मतलब इट्स अ गुड गुड अचीवमेंट। और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, बट बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और मैं थोड़ा और बात कर। तो इस टाइम पे केक सेरेमनी है, मैं थोड़ा सा पास जाके देख लेता हूँ। I would like to call all the speakers on stage for cake cutting. क्या कर रहे हैं? Cheers for Coindcx. भाई क्या खोलो यार इसको। वन मिनट इसको पीछे से होल्ड कर। सो फाइनली यहाँ पे अब केक कटिंग सेरेमनी हो चुकी है, और इसके बाद भी और हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बाकी हाँ, क्राउड अच्छा खासा मिल रहा है, हम लोग अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं पूरे वेब सेशंस को। और अभी बस बाकी सब लोग यहाँ पे अपना काम करने में लगे हुए हैं, बिजी हैं। तो देखते हैं आगे और क्या क्या सेशंस होने वाले हैं। Hey everyone, hey, hello. Let's keep this energy high. Energy down नहीं जानी चाहिए. Okay. Cool, awesome. So I'm Uttam Singh. So today's topic for the session is Web3's career. So I will not talk about क्या Web3 क्या होता है. You already know what is Web3. सबको पता है वो GCPT definition. I'm not gonna talk about that. I'm gonna answer the why. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि come to Web3, come to crypto. But the main question is कि क्यों आना है? Why? I will answer that question, right? And लाइफ में कभी भी कोई भी बोले कुछ भी करना है तो ऑलवेज आस्क व्हाई, क्यों करना है वो चीज, राइट। सो आई एम गोना आंसर दैट क्वेश्चन। उसके बाद मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूंगा, हाउ यू कैन ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, हाउ वी कैन डू ऑल दैट स्टफ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन। वी डोंट हैव टाइम एंड आई विल नॉट बोर यू गाइस, फटाफट करेंगे। Awesome. So a little bit introduction about me. I'm Uttam Singh. I'm working as a developer relations at Player. Also, I worked with Polygon. I worked with Polygon for almost a year. First in the engineering team, and then as a devrel. I also did my research in blockchain that was sponsored by Government of Canada. So I was in Canada for 3 months. Other than that, I'm also a speaker. I've been to various events. I've been to colleges like IITs, and yeah, I'm also a content creator. You can follow me on Twitter or LinkedIn. Here is my Twitter and LinkedIn handle. इसके बाद भी if you have any doubt after the session, you can reach out to me. Awesome. So a little bit introduction about Flare.
So Flare is a EVM layer 1 blockchain. In simple terms, why it is different? क्योंकि आज के टाइम पे every chain is fighting कि यार मेरी चेन पे डैप बनाओ, मेरी चेन पे डैप बनाओ, but Flare is the only blockchain that is trying to connect everything. It is going to bring interoperability between chains ताकि data जो है freely flow कर सके and तुम्हारे if you are building something, right, so you will have a broader ecosystem, right? So this is all about Flare, and if you feel that you can contribute to Flare ecosystem, then definitely reach out to me. I will help you. Awesome. So yeah, we are celebrating the Bitcoin Whitepaper Day. So huge thanks to this Satoshi Nakamoto. We don't know who he is. हमारे पास just एक नाम है, and we have this white paper, right? So this is the only, अगर ये नहीं होता तो आज के टाइम पे हम यहाँ नहीं बैठे होते. This is how the actual Web3 stuff started, right? And also I brought a picture of Bitcoin Genesis block. So going on to the technical side of the things, Genesis block is the first block of a blockchain. So here is the picture of the Genesis block of the Bitcoin, right? And also there is a doubt between people. लोगों को ऐसा लगता है कि Bitcoin जो है वो सिर्फ क्रिप्टो का नाम है. नहीं, Bitcoin is the name of protocol and also the blockchain, right? And on the other side, Ethereum में क्या होता है? Ether is the name of token and Ethereum is the name of blockchain. तो कोई बोलता है ना मेरे पास Ethereum है, नहीं, you don't have Ethereum, तुम्हारे पास Ether है, right? So this is a misconception among people. Okay, so yeah. मूविंग ऑन टू अवर टॉपिक, व्हाई Web3, क्यों Web3 फ्यूचर है, ठीक है? तो वही मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, रीड राइट एंड ऑन बहुत सारे लोगों ने बता दिया है. आई विल आंसर द क्वेश्चन व्हाई, ठीक है? तो कमिंग ऑन टू द प्रैक्टिकल एग्जांपल, व्हाट Web3 इज ट्राइंग टू सॉल्व. तो इफ आई आस्क यू राइट नाउ, ईच वन ऑफ यू कि हु आर यू, ठीक है? तो यू विल बी सेइंग हे आई एम उत्तम सिंह, एंड इफ आई से प्रूव इट टू मी, right? If I say I don't believe you, prove it to me. So what you will do? You will keep an identity card with yourself. Government की कोई issued ID होगी, या फिर if you are a student, तुम्हारे पास कोई स्कूल की ID होगी, right? So you will show that to me that hey, this is my ID, this is who I am, उसमें लिखा है. But what if I say I don't believe you? मैं trust नहीं करता इन organizations पर, then you don't have any identity. मतलब इनके अलावा, these central authorities के अलावा, you don't have an identity, right? So this is what Web3 is trying to solve, providing you true identity. तुम्हारी identity provide करेगी. तो your identity will be on blockchain and nobody will be controlling it. Actually, it is decentralized, right? किसी का control नहीं है उसपे, right? So this is all about why Web3 is required, right? It is providing you true ownership of your money. Crypto क्या है? It is providing you true ownership of your money. ठीक है? किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कोई आरबीआई बीच में नहीं है. यू आर द ट्रू ओनर ऑफ योर मनी एंड योर एसेट्स, राइट? सो दिस इज ऑल व्हाई वी नीड Web3 and this is why Web3 is the future. And हम कहते हैं ना, जब भी हम ट्रेन में जाते हैं कि सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं, तो Web3 में भी वैसा ही है कि तुम अपने टोकन्स के लिए, तुम अपने प्राइवेट की के लिए, तुम अपने सब चीज के लिए तुम ही जिम्मेदार हो. इफ यू शेयर योर प्राइवेट की विद एनीवन, या फिर तुम अपनी कोई भी की शेयर कर देते हो, 12 वट का सीड फ्रेशेस होता है, वो शेयर कर सकते हो. अगर वो करोगे तो you will be gone, like all your money will be gone, so you are own responsible for all your assets. Okay, so this is why Web3 is the future. And talking about क्यों तुम्हें Web3 में build करना चाहिए, right? तो आज के टाइम पे ना everyone wants to win Web3. मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं, आप लोग के पास भी आते होंगे कि यार ये कंपनी है, we want to do something in Web3. So there is a hype, सबको Web3 में आना, right? तो सारे आज के टाइम पे तो हर एक दिन एक नया स्टार्टअप आता है, राइट? फ्रॉम गूगल से लेके फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट. कल परसों एक न्यूज आई थी कि गूगल इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग नोड इंजन्स टू इथेरियम ब्लॉकचेन, अभी सिर्फ इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए, राइट? सो every company is trying to get into Web3. रोज there is a new startup, every day new startup आता है. उसके बाद dev side of the thing, if you are a developer, right? तो if you are building something, like तुम प्ले स्टोर पे कुछ भी बना के ऐप डाल देते हो प्ले स्टोर पे, या कोई वेब ऐप बना देते हो, ठीक है? तो हाउ आर द चांसेस, कितने लोग तुम्हारे ऐप को या तुम्हारे ऐप को डाउनलोड करके चलाएंगे? बहुत कम, राइट? गिने चुने लोग, तुम्हारे फैमिली वाले, until unless it's a very very good app, ठीक है? बट वही साइड में अगर तुम Web3 में कोई ऐप बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, तो पीपल विल यूज इट. व्हाई? बिकॉज टैप ही नहीं है आज के टाइम पे. आज से 1-2 साल पहले तो लिटरली कुछ नहीं था. आज के टाइम पे तो फिर भी बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन आ चुके हैं ऐप्स के, बट स्टिल 1-2 साल पहले कुछ भी नहीं था, राइट? तो इफ यू बिल्ड राइट नाउ, you can actually be the next Mark Zuckerberg. And trust me, ऐसे लोग आजकल मार्केट में बनाते हैं जिनको लिटरली कुछ नहीं आता, पर वो स्क्रैच से सीखते हैं, वो बनाते हैं, राइट? तो दिस इज अ वेरी गुड initiative or good chance to
become the next Mark Zuckerberg, and you can definitely do it. हर कोई कर सकता है आज के टाइम पे. गेमिंग, डीफाई, कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐप बना दो, कोई भी ऐप जो है उसका डिसेंट्रलाइज वर्जन बना दो, राइट? सो पीपल आर गोना यूज इट एंड डेफिनेटली गोना यूज इट. तो तुम उसको कर सकते हो. उसके अलावा एवरी कंपनी इज हायरिंग. तो ये कंपनी बन रही है, दे नीड पीपल. याद रखना, कंपनी अपने आप से नहीं चलती है, दे नीड पीपल. So there are number of opportunities in the Web3 market कि कंपनी, सारी कंपनीज हायर कर रही हैं. टॉकिंग अबाउट द करियर साइड ऑफ द थिंग्स, विल मूव ऑन. सो देयर आर अ लॉट ऑफ Web3 करियर्स. तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर बन सकते हो. यू कैन बिकम डेवलपर. अगर तुम टेक्निकल साइड में नहीं जाना चाहते, यू कैन गो टू कम्युनिटी साइड ऑफ द थिंग्स, यू कैन गो टू द मार्केटिंग साइड ऑफ द थिंग्स. बट स्टिल बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. ऐसा नहीं कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिप्टो और Web3 एंड यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब. तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट? अदर देन दैट, ऑल्सो ट्रस्ट मी कि ये जो कंपनीज है ना, दे आर पेइंग मोर देन फैंग कंपनीज. फेसबुक, गूगल जितना पे करती है ना, उससे ज्यादा पे करती है, बहुत ज्यादा. ट्रस्ट मी, राइट? एंड देयर इज लाइक अ रिमोट कल्चर Web3 में. तो यू विल बी पेड अकॉर्डिंग टू यूएस स्टैंडर्ड्स और बाहर के स्टैंडर्ड्स, राइट? एंड इट्स ट्रू, पीपल आर अर्निंग दैट मच एंड इट्स नॉट फेक. ओके, talking about jobs and internships, so there are some websites like I used to share on Twitter. You can connect with me. बहुत सारी वेबसाइट है, तुम जाके यहाँ पे अपनी जॉब ढूंढ सकते हो. इफ यू वांट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जहाँ पे तुम जाके जॉब्स ढूंढ सकते हो. एंड इफ यू वांट अपना प्रॉपर Web3 फोकस रेज्यूमे बनाओ. इफ यू वांट अदर टिप्स, देन 2-3 गुड प्रोजेक्ट्स बनाओ and just showcase it to these guys, right? And be active on Twitter and LinkedIn. I will also give some tips at the end. Yeah, so talking about the technical side again, so just start building and learning about what smart contracts is. So आज से 10 साल बाद every contract you see, तुम्हारे घर के जायदाद के पेपर, सब कुछ, right? Everything will be on blockchain as a smart contract, right? So बहुत फ्यूचर है, बहुत ज्यादा स्कोप है, right? So you should start learning about what smart contract is. Start with a language. So there is Solana. For that you will have to learn Rust. But still I will suggest you to go for Solidity. For Ethereum and EVM compatible chains, Solidity is required. So go for Solidity. Then पढ़ो MetaMask क्या होता है, tools के बारे में पढ़ो. Start from scratch, but पढ़ना चालू करो. ये नहीं कि बाद में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ना चालू करो and you will get all of that stuff. Okay. Freelancing opportunities. So मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जॉब नहीं करते. Why? Because there are two ways of it. एक तो कंपनी का ऐसा लगता है यार कि बंदों को मैनेज करना इज वेरी टफ. ठीक है, इट्स वेरी टफ एज अ कंपनी एज वेल. आई डोंट वांट झंझट, क्योंकि मैनेज करना बड़ा टफ होता है. उसके बाद एज एन एम्प्लॉई एज वेल, आई डोंट वांट एनीवन टू सिट ऑन माय हेड कि यार ये करो ये करो ये करो. ठीक है, तो लॉट ऑफ पीपल आर चूजिंग फ्रीलांसिंग की काम करो, तुम काम दो, मैं काम करूंगा, एंड दैट्स इट, यू विल पे मी, दैट्स इट, राइट? सो दिस इज इन द Web3 मार्केट में ये बहुत ज्यादा चल रहा है. And there are a number of opportunities in this world. They are actually earning. Freelancing वाले ज़्यादा earn कर रहे हैं from jobs से, ठीक है? So if you want to learn about it, freelancing opportunities बहुत सारी हैं. Bug bounties हैं कि there are tasks, वो solve करो and you will get money. Other than that, hackathons में जाओ, जितनी भी hackathons होती है उसमें participate करो, भले नहीं जीतो, but participate तो करो. You will learn hundreds of things कि कैसे बनाते हैं, कैसे pitch करते हैं. हो सकता है अगली बार जीत जाओ, right? There's a ETH India hackathon going on in December. That is very, India के लिए बहुत बड़ी hackathon होगी. तो I will suggest, if you want to start building, go for it. Other than that, get grants. तो अभी जैसे सुमित सर ने बताया कि if you have any idea, just pitch करो, लोगों को बताओ कि यार ये आइडिया है, I need fund. तो लोग देंगे पैसे. बहुत सारे लोग यहाँ पैसे देने को ही बैठे हैं, right? They want people to build it, right? Other than that, content creation करो. अगर तुम्हें, if you're not on the technical side of the things, non-technical लोगों को समझाओ. अभी भी education की बहुत कमी है, लोगों को पता ही नहीं है, राइट? अभी भी तुम जैसे गूगल पे जाओगे ना, बहुत कम, और हिंदी में तो और भी नहीं है, राइट? सो गो फॉर इट, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट एंड यू विल इवेंचुअली गेट अ गुड जॉब एज वेल. ओके, सॉल्व क्वेस्ट, देयर आर 2 वेबसाइट्स, Bitcoin एंड Layer 3. फोटो खींच सकते हो. यहाँ पे जाके you will find a number of freelancing opportunities, all the opportunities, and you will get paid for doing and solving those quests. And last thing is Web3 communities. तो कैसे communities में involve होना चाहिए? Contribute to a DAO. What is DAO? DAO is decentralized autonomous organization. तो इसमें क्या होता है कि if you will join a DAO, you will actually have the authority or you will actually have the power to vote in the system में जो भी vote करोगे ना उसमें power मिलेगी, right? So you can join a DAO and start to contribute to it. You can get money as well for that. Other than that, start engaging on Discord. तो कोई भी प्रोटोकॉल पकड़ो, कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी प्रोजेक्ट, go to their Discord server,
वहां पे अपना ओपिनियन दो। भले को फाउंडर से ही बात करो, कुछ फाउंडर अपने डिस्कॉर्ड पे डाल रहे हैं, उसको बोलो नो आई मेरा ओपिनियन कुछ और है, उससे बात करो। व्हाई दिस इज मॉडर्न, क्योंकि तुम अपनी वॉइस आगे रखोगे ना तो यू विल गेट रिकॉग्नाइज, राइट। सो इसमें यू विल ऑल्सो गेट चांस टू वर्क विद देम, जॉब मिलेगी, क्योंकि वो देखते हैं वेब3 में तो बहुत ज्यादा देखते हैं कितने लोग कम्युनिटी में इन्वॉल्व हैं, कितने लोग कम्युनिटी में नहीं इन्वॉल्व हैं, राइट। तुम तो जैसे जैसे कम्युनिटी में इन्वॉल्व होगे, जितना इतना कंट्रीब्यूशन करोगे, यू विल गेट रिकॉग्नाइज्ड एंड यू विल गेट अ गुड जॉब। अदर देन दैट, बी एक्टिव ऑन ट्विटर। ट्विटर इज हब फॉर वेब3, ठीक है। ट्विटर पे हर चीज मिल जाती है, लाइक वेब3 की जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं सारी की सारी ट्विटर पे होती है, जितनी बातें होती हैं सब कुछ ट्विटर पे होता है। तो बी एक्टिव ऑन ट्विटर, थोड़ा कंटेंट डालो वहां पे लोगों से बात करो, उनके ट्वीट्स के एंगेज करो, जैसे डिस्कॉर्ड पे करते हो नॉर्मली, राइट। गो फॉर इट। अदर देन दैट, क्रिएट कंटेंट। एज अ साइड की कंटेंट की बहुत कमी है, अगर लोगों को एजुकेट करोगे, यू विल ऑल्सो गेट टू लर्न अ लॉट and you will get a good job as well, and you will get recognized. Other than that, become an ambassador. तो ये एम्बेसडर क्या है? बिकम अ कम्युनिटी पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसका एम्बेसडर बनो, यू विल गेट टू रिप्रेजेंट द कम्युनिटी और द प्रोजेक्ट इन द पर्टिकुलर लोकल एरिया और योर कॉलेज में। बहुत सारे लोग स्टूडेंट है, राइट, तो बहुत सारे स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम होते हैं। उससे होता क्या है, एक तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, एंड इफ यू वांट टू गो ऑन द डेवलपर साइड, कम्युनिटी साइड ऑफ द थिंग्स, तो इवेंट्स में मदद मिलती है। उसके बाद कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करो, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, तो गो फॉर इट, राइट। क्योंकि इन्वॉल्व होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम वेब3 कम्युनिटीज में इन्वॉल्व नहीं होगी, इवन एज अ डेवलपर, इवन एज अ कुछ भी, कोई भी हो, कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेब3 इज ऑल अबाउट कम्युनिटीज। अदर देन दैट, अटेंड और ऑर्गेनाइज इवेंट्स। इफ यू गाइस आर हियर, you are already doing it, congratulations for that, right? You are doing, and if you want you can also organize events as well, उससे भी बहुत फायदा होता है, तुम्हें 4 लोग मिलते हैं, उनसे सीखने मिलता है। like if you came today, nobody was knowing कि सुमित सर आने वाले हैं, so right, तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, and it was amazing, awesome. So just to end to my presentation, talking about India, so India actually has a lot of potential, as Sumit sir said. This was actually पहले से मेरी स्लाइड में था, तो रिसेंटली मैंने लिंक्डइन पे शेयर किया था कि इंडिया इज actually the world's third largest Web3 ecosystem, and also 11% of the talent of Web3 is in India, right? तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, right? And इंडिया में तुम अगर डेप बनाओगे ना तो लोग यूज करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी है, राइट। फायदा उठाओ ना उस चीज का, इतनी सारी पॉपुलेशन है, लोग डेफिनेटली तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करेंगे ही करेंगे, राइट। even if we think about it, that Web3 actually is a chance कि हम इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। इससे पहले Web2 में we were not that high, क्योंकि यूएस एंड कनाडा ये सारी कंपनीज ही थी, ये सारी कंट्रीज ही जो आगे थी। बट आई स्टिल थिंक as Sumit sir also said, India has that power, and India is leading this Web3 ecosystem, and I really wanted to thank Coindcx. Why? Because आज से 2-3 साल पहले ना तुम किसी से बोलते ना कि क्रिप्टो, तो दूर भाग जाते थे कि यार क्या बोल रहा है ये क्रिप्टो, ये तो फालतू चीज है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे दे डिड अ गुड थिंग, एंड दे आर ट्राइंग टू बिल्ड ब्रिंग Web3 to the mainstream in India, right? So huge thanks to Coindcx actually, and yeah, I guess that's it about it. If you still have a doubt, ping me on LinkedIn or Twitter. I create content over there as well. I'm always there to help you, even after this session. If you have any questions, feel free to ask me. And yeah, thanks for being a great audience. That's all of my time. Thank you so much. The answer तो फिलहाल में यहाँ पर अब क्विज टाइम है और हम लोग कुछ क्विज is all of the above. लगभग 13 क्विज़ें देखते हैं कि इनमें कौन विन करता है। स्क्रीन पे सारी चीज़ आ रही है, एंड यहाँ पर भी हमें ईच एंड एवरीथिंग देखने को मिल रही है। ओके, तो What is layer 3 in Web3 stack? Infrastructure, application, protocols, and services. तो इनके जवाब देते हुए देखते हैं कि क्या कौन जीतता है, और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्रिप्टो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल ही रही है। मजेदार क्रिप्टो शायरी में आज लेकर आया हूं। मेरा नाम है सुहेल जेठवानी। तो अर्ज किया है, टू द मून बोल बोल कर, टू द मून बोल बोल कर नाले में खुदा दिया, टू द मून बोल बोल कर नाले में खुदा दिया, यार ये लूना ने भी ना सबको गजब चूना लगा दिया। इन्फ्लुएंसर ने कहा था 100x कॉइन करोड़पति बनाएगा, इन्फ्लुएंसर ने कहा था 100x कॉइन करोड़पति बनाएगा। आज दोस्त भी पूछते हैं साले पैसा कब लौटाएगा। लास्ट वाला उन लोगों को डेडिकेटेड है, आप सभी को डेडिकेटेड, जो कि अपनी संडे की नींद छोड़ के यहां पर आए हैं।
क्रिप्टो करेंसी की ना बाढ़ सी आ रही है, क्रिप्टो करेंसी की बाढ़ से आ रही है, धीरे धीरे करके पूरी इंडिया पे छा रही है। क्रिप्टो करेंसी की बाढ़ सी आ रही है, धीरे धीरे करके पूरी इंडिया पे छा रही है। बस हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, बस हिम्मत मत हारना मेरी दोस्त, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी सिर्फ सदियों में एक आती है और कॉइनडीसीएक्स द्वारा ये जनहित में जारी है। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आखिरी सेशन है, टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी आई वांट टू शेयर फ्यू थिंग्स विद यू पीपल एंड रेदर देन मैं जो बोलूंगा वो सब एवरीथिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन गूगल। यहाँ पे आके कोई कुछ भी बोलता है वो सब गूगल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। बट द थिंग इज you need to understand the things in a very basic language so that actually you can use the knowledge and you can implement it. लोगों से मिला whenever last meet जब हुई थी इंदौर में, so I told everybody whenever I was meeting anybody XYZ, so I told everybody that every new developer that first go and read the 9 papers, like the nine pager document of Bitcoin Whitepaper. Bitcoin Whitepaper is also known as the Holy Book of Satoshi. So it's one of the basic initial documents which will tell you about the blockchain, crypto. Okay, so उसको आप जितनी बार पढ़ोगे ना, you will learn new things every time. उसमें जो एक like one single उसमें जो एक कीवर्ड है, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है, if you read about it, you will gain knowledge again and again. If you search about a terminology on Google, then you will gain knowledge again and again. So one thing, downfall of the economy, when the Lehman Brothers bank was actually collapsed, उसके next day, अच्छा किसको ईयर मालूम है लेमन ब्रदर्स का? 2008 डेट मालूम है? अच्छा bitcoin.org कब रजिस्टर हुआ था, ये डेट किसको मालूम है? bitcoin.org when bitcoin.org was registered, ठीक है। सो ये डेट मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आप जाके खुद सर्च कर लेना, अभी कोई ना कोई 1 मिनट में सर्च कर लेगा। ओके, सो दैट वाज जब लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था उसके 1 महीने पहले की बात है, when bitcoin.org was registered. One side Lehman Brothers, the whole banking system was collapsing. उसके नेक्स्ट डे AIG लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोलैप्स हुई, ठीक है। सो जब वर्ल्ड इकोनॉमी एक ऑलरेडी एक बहुत बड़े डाउनफॉल से गुजर रही थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम bitcoin.org कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहा था, ठीक है, बिटकॉइन पे वर्क चल रहा था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे थे लोग। ओके, सो ये दोनों चीजों की अगर आप हिस्ट्री देखो, इफ यू गो एंड सर्च ऑन इंटरनेट, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दिस। ओके, सो a lot of things, let's say, have you heard about Rothschild family? Have you heard about Shepherds, Morgans? सुना है किसी ने इन families के बारे में? So there are certain powerful families of this world. So families like Rothschild, ठीक है, Bitcoin आने से 30 साल पहले किसी बंदे ने अनाउंस किया था that there will be a new world order currency 30 years from now, right? तो Rothschild family के he was Sir Rothschild, he was the one, उसने बोला था कि भाई 30 साल बाद कोई एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करेंसी आएगी। तो या आइदर उन्होंने प्रेडिक्ट किया था या वो ज्योतिषी थे, या लाइक हाउ कैन समबडी टेल कि इतने साल बाद एक बड़ी करेंसी आने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है। सो बहुत सारी चीजें जब हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, a lot of things were already planned and written by the most powerful people on this world, on the world. So they are आप कह लो कि सब billionaires हैं, or maybe some of them actually belongs to Illuminati. So a lot of lateral events are there behind the crypto community. Okay, so जिसको इंटरेस्ट है वो lateral events के बारे में जाके पढ़ सकता है, समझ सकता है। जिस स्टेज पे स्टॉक मार्केट था 1990s में, ओके, ध्यान से सुनना, आई एम टेलिंग यू अबाउट हाउ टू पिच द पीपल एट योर होम, एट द प्लेस यू आर लिविंग, एंड योर पेरेंट्स एंड अदर पीपल। आप कैसे लोगों को क्रिप्टो के बारे में समझाओगे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बिकॉज एवरी टाइम ना जब आप बात करते हो क्रिप्टो की, ब्लॉकचेन की, ठीक है, तो लोग बोलते हैं क्रिप्टो स्कैम है। कोई लोगों का कुछ लोगों को आजकल अभी डिफरेंस ही नहीं मालूम है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो, एंड दैट इज द रियल थिंग, दैट इज समथिंग व्हिच पीपल शुड नो अबाउट इट, ठीक है। Each and every person who belongs from the Web3 community, ठीक है, each and every person who's sitting in this room, and if you are a developer or if you are a marketer or if you are working in a Web3 company, each and every person is a brand custodian of the whole Web3 community or the whole Web3 world. Okay,
So you yourself as a brand custodian, wherever you are living, wherever you are working, or whenever you are talking to different people about Web3 and crypto, you should know कि हम खुद पहले उसके बारे में अच्छे से जाने, समझें, and हम जो बोल रहे हैं वो सही बोले और सही information pass on करें. Okay, so that is more important. Each and every person is a brand custodian of Web3 who is a part of the Web3 community. Okay, so you need to tell people कि 1990s में अगर इंडिया में किसी को समझा रहे हो, सिंपल 1990s में या 2000 में जिस स्टेज पे क्रिप्टो था, सॉरी जिस स्टेज पे स्टॉक मार्केट था, ठीक है, आपने सुना होगा कि 1990s में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, a lot of things are going on, डब्बा ट्रेडिंग हो रही है गुजरात में, ठीक है. सिमिलरली अभी उस स्टेज पे क्रिप्टो है. सो इफ वी टॉक अबाउट 2022 और 2023, ठीक है, क्रिप्टो अभी उस स्टेज पे जिस स्टेज पे शेयर मार्केट था 1990s में. तो a lot of things will come and go. बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, बहुत सारी कंपनीज आएंगी जाएंगी, स्कैम्स होंगे, बट अल्टीमेटली एवरी डे द नेटवर्क, द कम्युनिटी एंड द होल इकोसिस्टम इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. ये सारी चीजें होती रहेंगी. एंड टॉकिंग अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यस, मेरे को ऐसा लगता है जितनी मेरी लोगों से बात होती है, गवर्नमेंट विल सून ब्रिंग द रेगुलेशंस, मे बी आफ्टर द सेंट्रल इलेक्शंस, बट यस, गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स. एंड अगर आप चाहते हो, इफ यू रियली वांट दैट proper positive regulation should come in India, so each and every person of the community should work in that particular direction. So you are a brand custodian and you need to tell people, you need to make people aware about what crypto and blockchain is all about, what Web3 is all about. Unless and until the words will not spread, you will not teach people about it, the positive change will not come in the industry. So this is one thing. Now talking about brand building, PR and brand building for Web3 startups. See, everybody talk about how to get started with Web3. Developers अपनी बात करते हैं, marketers अपनी बात करते हैं, ठीक है. तो लोग बोलते हैं I need to start a career in Web3. So starting with, आप ऑलरेडी स्टार्टअप बना चुके हो, बना रहे हो, ओके, ठीक है, इट्स ऑलरेडी ऑन द वे. But at the same time, if we talk about brand building, it's very, very important. Okay, from day one, starting with your white paper, starting with your light paper or yellow paper, whatever paper you release, the first initial document or the domain in which you release for the public to understand about your project, वहां से सारी चीजें चालू हो जाती हैं. From your logo, then from your color theme, each and everything. Okay, so वहां से बेसिक चीजें चालू होती है. लेकिन इसके अलावा अल्टीमेटली रीचिंग आउट टू इन्वेस्टर्स, ठीक है, एक परसेप्शन, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू ब्रेक द परसेप्शन एंड क्रिएटिंग अ परसेप्शन. सो व्हाट परसेप्शन यू नीड टू ब्रेक इज, अभी तो परसेप्शन क्रिप्टो को लेके देयर इज अ लॉट ऑफ परसेप्शन, ब्लॉकचेन को लेके देयर इज अ लॉट ऑफ परसेप्शन. सो वन साइड, if you're meeting to new people, you need to break the perception what he is actually thinking about crypto industry as a whole. First you need to break the perception of the investor. Okay, so once you make him, when you make him positive and you give him a positive perception about the crypto, then you need to give him a perception, you need to make a perception about your startup or the company which you are working for. Okay, now how you will make the positive, like how you will create the perception? Via news, via media, via social media, and number of things are there. ठीक है, okay. And crypto platform कौन ला रहा है, like exchange जैसा, some anybody coming up with a coin or exchange? Okay, so talking about cryptocurrency exchanges, a lot of things are there. लोगों को आज भी समझना पड़ेगा, it is not about releasing, it is not only about releasing a white paper and creating a perception, not only about creating a community, but ultimately if you want to get your token listed on a particular exchange, आप अभी से पढ़ा, you just need to understand the whole process and document how you need to get your token listed ultimately. ठीक है, if you start studying about it right now, you understand the things. So whatever startup you're coming up with and आपका native token or native cryptocurrency or coin जो भी रहेगा, ठीक है, you can make sure that you follow all the norms, all the things you are going in the right direction. Okay,
even registering your company in India and abroad. हमारा दिक्कत कोई समझो भाई, हमारा कैमरे की बैटरी पूरी डेड हो गई है और वैसे में घूम रहे हैं इवेंट में बस। चलो तो सुजल भाई भी अपने को मिल गए, बाकी हर्ष भाई और अभी आशीष सर तो आए नहीं थे, तो हम लोग इवेंट को अटेंड कर रहे हैं पूरा की पूरा। और कैसा लग रहा है ये वाला इवेंट? एक नंबर भाई, ये सबसे जोरदार इवेंट हुआ है पूरे इंदौर में अभी तक का। और मतलब पूरे प्लेस को अगर देखें यार इस बार अच्छा खासा इन्होंने बड़ा करा। आई थिंक पैसा लगा है भाई, बहुत पैसा लगा है। तो सुमित सर भी आ गए थे। हाँ, इस बार सुमित गुप्ता जी जो कि Coindcx के फाउंडर है वो भी आ गए थे, तो अलग ही सीन बन गया। यार मेरा कैमरा डेड हो गया, नहीं तो अभी अच्छी खासी और बढ़िया फोटो थी। आई थिंक इसमें आवाज़ ढंग से नहीं आएगी, तो इसको यहीं पे रखते हैं, फिर बाकी की मैं देख रहा हूँ उससे। ये हमारे पाजी और हाँ, एक ट्विटर इन्फ्लुएंसर फॉलो कर लो, उत्तम सिंह इनका नाम है, जो ट्विटर पर आपको आराम से मिल जाएंगे, अच्छे ट्रेड मिलेंगे। और अगर आप डेवलपमेंट पार्ट में हो तो डेफिनेटली फॉलो। या थोड़ा सा और बचा था और उस टाइम पे ना, मतलब कैमरे में जो मेरे पास कार्ड था एक्चुअली वो पूरा फुल हो गया था आज। मतलब मैंने खूब सारी रिकॉर्डिंग करी थी, अच्छी खासी चीज़ें, तो अब एडिटिंग में तो अच्छा खासा टाइम यहाँ पे लगना ही लगना है। बट ऑलमोस्ट जो इवेंट था वो बहुत मज़ेदार था। मतलब पिछले जो पास्ट इवेंट थे उससे ज़्यादा इसमें लोग थे, ज़्यादा इंगेजमेंट चीज़ें देखने को मिली, स्पीकर्स ज़्यादा थे, तो हमें वैरायटी ऑफ चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिली, नए प्रोजेक्ट से कनेक्शन मिला, क्या क्या वो लोग नए अपग्रेड्स कर रहे हैं। और आफ्टर जब प्रोजेक्ट मतलब पूरा इवेंट यहाँ पे हो गया था, तो उसके बाद भी हम लोगों ने थोड़ा गेट टुगेदर किया, देखा कि कौन अपनी स्पेस में क्या चीज़ें कर रहा है, किस तरीके से बिल्ड कर रहा है। बहुत सारे बिल्डर्स थे, बहुत सारे डेवलपर्स हैं, एंड इवन दैट बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो मुझे लगता है कि अगर ऑफलाइन इवेंट में जाते हैं ना, तो वो एक अलग ही होता है कि ऑनलाइन तो हम सभी लोग मिलते हैं, बात करते हैं, चाहे ट्विटर हो, यूट्यूब हो, बहुत सारी जगह हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यार ऑफलाइन इवेंट्स के अंदर भी जो चीज़ें आपको मिलती हैं, जो स्किल्स मिलती हैं और जिस तरीके के एक गुड ह्यूमन्स मिलते हैं जो आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड जो नॉलेज देते हैं, वो एक अलग है। मैं डेफ़िनेटली आपसे कहूँगा कि अगर आप लोग कभी किसी इवेंट में जा सको तो डेफ़िनेटली जाओ। देखो कुछ इवेंट पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली कोशिश करना चाहिए कि जाओ। इससे आपके नेटवर्क में भी थोड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जुड़ते हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड यस, आज के इवेंट में बहुत सारी थी, बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा, जो कि हमने बाद में गेट टुगेदर में भी थोड़ा करा था। अब मैं तो ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड उसके बाद नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कार्ड फुल हो गया था और कोई दूसरी स्पेस नहीं थी। लेकिन हाँ, अगली बार से और कोशिश करूँगा ज़्यादा स्टोरेज और सारी चीज़ें रहें, तो और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। लेकिन जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो डेफ़िनेटली इस चीज़ को चेकआउट करेगा। एंड स्पेशल थिंग तो ये थी कि आज मतलब सुमित जो थे वो भी ऑलरेडी आ गए थे, जो सीईओ हैं Coindcx के। एंड ये एक सरप्राइज़ एलिमेंट ही था, बट थोड़ा-सा ऐसा अनुमान था कि हाँ, वो आने वाले हैं, बस न्यूज़ थी, लेकिन ऐसा कन्फर्म नहीं था कि वो आएँगे। एंड वो आए, ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं आए थे, आई थिंक बस उनका जो एक स्पीच था उसके बाद भी वो 5-10 मिनट रुके और फिर वहाँ से चले गए। अब फाइनली देखो तो मैं तो घर आ गया हूँ, मैंने अपनी तरफ से जो एक्सपीरियंस था आज का पूरा वो आपके साथ शेयर किया है, जो भी चीज़ें मेरे को वहाँ पे देखने को मिली। आगे भी इन फ्यूचर जो इवेंट्स होंगे उनको भी मैं कवर करूँगा और कोशिश करते हैं कि जो बाकी के इवेंट्स होते हैं उनको भी धीरे-धीरे कवर करें। और अभी शायद एक ईट इंडिया का भी एक इवेंट होने वाला है जो डेवलपर फ्रेंडली ज़्यादा होगा, तो कोशिश करते हैं अगर वो वाला इवेंट में भी हम जा पाएँ, शायद बैंगलोर में होगा, तो उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा ये इवेंट लगा, डेफ़िनेटली मुझे कमेंट करके बताना। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। देखो इवेंट्स वाली वीडियो बड़ी होती हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप एक्चुअली उस इवेंट में नहीं आ पाते हो। इवेंट का टाइम 6-7 घंटे के आसपास का रहता है एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो कोशिश करा कि 1-1.5 घंटे के अंदर ही इस वीडियो को सम अप कर दूँ। जितनी सारी चीज़ कवर कर सकता था, वो मैंने आप लोगों के लिए करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डेफ़िनिटली शेयर करो यार, ऐसे कंटेंट आपको मिलता रहेगा अपने इस चैनल के ऊपर, क्रिप्टोवेल के ऊपर। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हम मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।